Yeah, good morning, friends, and welcome to the session. Yesterday we had a pretty much predictable expiry of निफ्टी. अभी देखिए मार्केट जब साइडवेज हो जाता है ना तो एक्सपायरी फोकस में आ जाती है, तो जो प्राइस मूवमेंट रहता है वो ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल के हिसाब से ही मोर और लेस यू विल फाइंड इट. But before I start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. So just give me a minute. One second. I'm just trying to fix my cable wire. I could change it because daily is giving some trouble. There you go. I got it. So I'll just share the screen once again. Yeah, I was reading out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute financial advice. So let's start. Yesterday is yesterday, today is a fresh day, so we'll have to approach the markets accordingly. Let's see global headlines क्या बोल रहे हैं. फिर से इराक कूल ऑफ कर रहा है. See, this thing is creating that volatility in that 6% band. Now he's saying US futures rise on cooling rate fears. Sorry, it's rate fears. Strong earning Iran strike continues. तो इसको मिक्स बोल सकते हैं, neither positive nor negative. So even US markets were yesterday more or less flattish, but they were not negative. थोड़ा एक sanity restore हो गया. So it was also seen in our markets. So let's check what Asia is doing right now. Chetan, good morning. Hi, Madhur. Everybody, Abhijit. एशिया अगर देखें तो यहाँ पे रेड या मोर ऑफ दिस थिंग इज शोइंग ग्रीन इंक्लूडिंग दिस थिंग. सो मार्केट में देखिए एक डिक्लाइन के बाद थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग. ऑल वी कैन से दैट. अंकित, गुड मॉर्निंग अंकित. ओके, सो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट विल गो एंड चेक क्रूड. देखिए क्रूड में वो स्विंग आते रहेंगे. व्हाट वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर द लास्ट 1 month. So if I take crude, I'm not going to change the marking. More or less, crude may just swing up. It looks to be matured enough. See, there is a gap over here, and we are following this gap. Crossing this gap to me looks tough now. So crude में more or less एक जो उछाल आना था हो सकता है $2-3 आ जाए and it's done for the short term. That's how crude is structured. After that, we can expect a dip in the crude all the way till this breakout level. So crude में जो I think 10-20% more is left in context of swing. The swing to me looks more or less matured. Till some geopolitical risk does not surface. After that, if I see GIFT Nifty, more or less it will be flattish to positive. Yeah, so GIFT Nifty is plus 29 points. Nothing much in GIFT Nifty. So आज का जो मार्केट है ना, it is going to be, it will be, देखिए मार्केट को 3 फेज में डिवाइड कर लीजिए. प्लीज डिवाइड द मार्केट इनटू 3 फेज. मॉर्निंग, आफ्टरनून and post lunch. Trade the market in all those 3 sessions. Don't have one trade which is in morning till the evening. It is not going to work. Markets choppy है, तो इसको हम टाइम जोन्स बोलते हैं. So which is 9:15 to 11. Try to finish one trade, or I'll put it 12. Then it's 12 to 2. Then it is 2 to closing. ये 3 टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए. डिसाइड वेयर यू आर गो कंफर्टेबल विद द प्राइस चार्ट्स एंड वेयर यू वांट टू ट्रेड. वेदर यू वांट टू ट्रेड द ओपनिंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और पोस्ट लंच सेशन. मार्केट में ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेंड नहीं होता तो क्या है, कोई भी मूव है वो 1-1.5-2 घंटे में फिजल हो जाता है. तो आप अगर ट्रेड पकड़ के बैठते हो देन इट्स नॉट द करेक्ट थिंग.
Getting my point? How many of you agree? Give me a yes. You have to treat this in three parts. इतना करने के बाद now we'll go to Nifty. If I go to Nifty, देखिए निफ्टी में इनसाइड डे कल बना था. इनसाइड डे का मतलब है जस्ट ड्रॉप अ लाइन एट दिस लो, दैट्स इट. इंट्राडे चार्ट्स पे सबसे पहले लाइन होनी चाहिए आपको. यू नो व्हाई? व्हाट इज द रेलेवेंस? दिस लाइन इज द लो ऑफ दैट बिग डे एंड नाउ वी हैव एन इनसाइड डे. इनसाइड डे का मतलब वो लो टूटता है तो फिर से एक नरमी की तरफ मार्केट जाता है. सो दिस लाइन शुड बी देयर ऑन योर इंट्राडे चार्ट्स. आफ्टर दिस आई विल गो टू आवरली चार्ट्स. See, hourly mein, that day is low and this gap are over here. So this to me is a support. Got it? How we create those demand bands? Which takes into account previous day's low. And after that, मैं ये जो spinning top है उसका half ले रहा हूँ. Why half? Because I'm taking from body till the wick. So this is how my demand is there in the markets today. Now, on the supply side, the way you drop a line over here, यहाँ पे आप देखिए you are having matching highs. तो ये मुझे लग रहा है क्रॉस करना टफ होगा. इन द सेंस इन अ गुड डे मार्केट कैन राइज. सो इमीडिएट ऑन अ 60 मिनट्स जो कल का गैप है मैं वो ले रहा हूँ. So that way I am sorted out from the intraday perspective on a 60 minutes. Got it, friends? How we are doing it? Okay. इसके बाद you go to 15 minutes. बहुत बार क्या होता है ना, जरूरत नहीं है 15 मिनट्स पे. ऑल वी डू इज ट्राई टू फाइंड एंड फाइन ट्यून इट. तो 15 मिनट्स पे मैं इसको फाइन ट्यून कर देता हूँ, गैप ले लेता हूँ. ओवर हियर आई जस्ट फाइन ट्यून टिल द स्टार्ट ऑफ द गैप. ओके. And in this 15 minutes, I'll take the candle at the lowest point. There we go. We are set for the day. Got it now? How we came from daily uh, to intraday? So now you see pattern क्या बन रही है 15 मिनट पे मॉर्निंग ट्रेड्स के लिए. The pattern which we see over here is if I join this highs, so we have a very very compact channel. So if I join this highs and draw it, so this is how Nifty is positioned for the day. Everybody clear? Now, what indicators you are going to use today? VWAP should be there in front of your screen today throughout the day. VWAP को छोड़ना नहीं है. Along with VWAP, you can pick up any of the momentum. But ये देखिए momentum की बात आती है, that means it's only for that quick 40-50 points. So I don't know how to create this poll. After that is, are we missing something or कुछ देखना है? Now, my answer over here is, I'll just show you. Yesterday, had you plotted the VWAP? देखिए मार्केट अभी चॉपी मार्केट इज नथिंग बट gyrating around the VWAP. Pick up your market open, dipped down. Cross the VWAP, you got your 50 points. Broke the VWAP and VWAP acted as a resistance. So are you understanding in a choppy market or sideways daily range how important VWAP? There is momentum है नहीं यार, momentum भूल जाओ अभी. You are now trading volatility and choppiness. So your VWAP will be of a great use. Right? So that's how markets are. And along with the VWAP, what I have shown you also that I use this system, which I have told you, please go through it. I have kept it in the tips and tricks section. I'll just show you. Either you can use it on a 5 minutes or a 15 minutes time frame. So, okay, everybody knows.
So this is how Nifty is, and VWAP should be there. VWAP on your screen throughout the day. And if you want, you can include the bands or otherwise plain VWAP. देखिए मार्केट जब नाउ आई देखिए एक पर्पस खत्म हो जाता है रिमूव दैट स्टडी अनदर थिंग आई वांट यू इज कीप योर बोलिंगर बैंड्स प्लॉटेड ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यू नो व्हाई देखिए आपको लगता है यहाँ से और नीचे चला जाएगा बट एट बैंड इट बिकम्स ओवरसोल्ड सो एक मिडिल बैंड का स्पाइक्स देता है टुडे ऑल्सो इफ इट क्रॉसेज ओवर हियर द अपर बैंड एंड दिस रेजिस्टेंस आर मोर और लेस ओवर देयर सेम गेटिंग इट सो दैट वे आप इसको रेजिस्टेंस भी ले सकते हो along with the upper band if you have done some breakout or stuff like that to book your profits. सो बोलिंगर बैंड हम इसलिए डालते हैं अगर विवैप टूट गया तो नीचे जाएगा कहाँ तक टिल द लोअर बैंड नाउ यू गॉट इट या धीरज आई विल कम टू विक्स सो दिस इज हाउ निफ्टी इज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट नाउ लेट्स गो टू इंडिया विक्स या धीरज समहाउ दिमाग से आज निकल गया बट विक्स देखिए मोर और लेस अभी एक बैंड में चला गया सो विक्स इज नॉट शोइंग एनीथिंग ऑल इट शोइंग इज दैट विक्स की ये स्विंग है तो मार्केट की भी स्विंग्स ही रहेगी कोई ब्रेकआउट्स कोई ट्रेंडिंग मूव्स अभी दिख नहीं रहा है वो 3% के बैंड में वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में या जय हिंद इन्वेस्टमेंट रिलायंस आई डू इन द इवनिंग here we just cover the indices after that if time permits I'll after that we go to bank nifty देखिए बैंक निफ्टी ने 200 डीए में आपकी लाइन ड्रॉप कर दो कल का लो वाज एग्जैक्टली 200 डीए में सो इफ आई गो टू बैंक निफ्टी 200 दिन का एवरेज इंट्राडे चार्ट्स पे लाइन होनी चाहिए आपकी अदरवाइज यू माइट goof up in your trading so yesterday's low was exactly 200 डीए अपस्विंग में ये रेफरेंस पॉइंट है अगर टूटता है तो इसे रेफरेंस पॉइंट फॉर अ डाउन स्विंग एंड मैचिंग हाइज यहाँ पे बन गया बैंक निफ्टी में नाउ वी गो टू आवरली चार्ट्स यू सी 200 डीए में इज ओवर हियर पे अटेंशन एवरीबॉडी एंड यू आल्सो हैव अ बेस व्हिच इज अ डिमांड बेस बिकॉज यहाँ पे काफी ट्रेड्स हुए एंड देन व्हाट हैपेंड प्राइसेस टुक ऑफ फ्रॉम देयर एक स्विंग ऊपर आया अगर आपको ये इंफॉर्मेशन रहते तो कल भी 300 200 पॉइंट यहाँ पे मिले सबको इफ स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस create trading opportunities remember that 259 points today also the level is same मार्केट में वॉलेटिलिटी है कभी भी अफरा तफरी आ सकती है दैट्स द रीजन वी आर अगेन इक्विप्ड विद अ एक्सट्रीम लो सपोर्ट व्हिच इज वे डाउन हियर नाउ एज फार एज रेजिस्ट दिस थिंग इज कंसर्न यहाँ पे मैचिंग हाइज है मैचिंग हाई का मतलब क्या है कि जब तक अभी ये लेवल नहीं निकल रहा कोई अपस्विंग नहीं है इट्स जस्ट वॉलेटिलिटी इन द रेंज दैट्स द पर्पस ऑफ मैचिंग हाई हियर यू हैव अ यस्टरडेज गैप ऑन अ 60 मिनट्स तो ये मेरा 60 मिनट्स का सेटअप है आई नो वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इज ओके धीरज आफ्टर दैट गो टू 15 मिनट्स 15 मिनट्स में यू कैन फाइन ट्यून द लेवल्स ये तो फाइन ट्यून की जरूरत नहीं है नाउ दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक इज देयर एनी पैटर्न डेवलपिंग दैट वी हैव टू गो एंड चेक if you check on bank nifty if the moment you have two lows and two highs some pattern has to be there you have this channel if it breaks the channel at 57555 it has the tendency to spike right and this is how bank nifty is looking like everybody got it how we are drawing conclusion yeah we'll take up stocks at some point I want you to get certain level of expertise in the indices and this is how the bank nifty is positioned today. And after this, yeah, do post your comment once I end the session. It good, bad, ugly doesn't matter. Again, one thing that we have worked very hard towards having the magazine, which is the Trading Titan Part 2. So you can go to the, I'll just give you the link in the magazine session. Make sure once a quarter we spend and release this. First was Trading Titan on technicals.
Second was the trading titan, which is an investor guide. So in the magazine section, you can forward it to your trading friends also. So मैं ये link डाल देता हूँ. Make sure you read the magazine and give me the feedback because this magazine is for you. इस बार हमने थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट इशू निकाला, फाइन. सो फर्स्ट इशू वाज दिस एंड this is the second issue of Trading Titan magazine. So that's all from my side. We are well prepared today. And निफ्टी पे आप बैंक निफ्टी पे 200 डीएमए का आपको ध्यान रखना है, जो कि कल का लो था. ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको अच्छे ट्रेड्स आते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. थैंक्स. हैव अ नाइस डे. And please post your comment once I end this session. Your comments will help us to improve upon the sessions, good, bad, ugly. Just drop a line.